TM, we've been bringing you the numbers, we've been deciphering the budget for you, we've been talking about what's in it for you, what's in it for me, and what's in it for everyone else as well. And we'll continue to do that over the next 4 hours or so, and we will talk about the political message from the budget over the next 1 hour. Sonia जी, पिछले कुछ समय से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किसको क्या मिला है, किस सेक्टर को कितना फायदा होने वाला है, कृषि क्षेत्र को क्या क्या रेवड़ियां बांटी गई हैं, रोजगार सृजन में क्या चीजें मदद करेंगी, वो सब चीजें हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब इस बार हम आपको बताएंगे कि क्या राजनीतिक संदेश इसका दिया जा रहा है, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को बताया विजन और एक्शन वाला बजट। वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को दी बधाई, कहा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बजट। हर नागरिक होगा आर्थिक रूप से सशक्त, किसानों की बढ़ेगी आय, युवाओं को मिलेंगे रोजगार, निवेश में होगी बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में करदाताओं के लिए की नए टैक्स स्लैब की घोषणा। नई आयकर व्यवस्था में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। दो 2020-21 के बजट में किसानों के लिए किए गए बड़े ऐलान। पशुपालन, भंडारण, नीली अर्थव्यवस्था और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 16 सूत्री कार्य योजना पर जोर। बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्तीय क्षेत्र में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजार और अवसंरचना में की अनेक सुधारों की शुरुआत। आईपीओ लाकर LIC में अपने शेयर बेचेगी सरकार। $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने की कोशिशों के लिए वित्तीय ढांचा होना चाहिए मजबूत, ऐसा कहा गया। तो कई आर्थिक सुधारों की बात की जा रही है और आर्थिक सुस्ती कैसे दूर हो उस पर जोर दिया जाएगा। बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना है, नौजवानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। बजट में जिन नए रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे। जिन नए रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। आम बजट पर पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या कहा। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है। 2,83,000 करोड़ रुपए मिले हैं किसानों के लिए,
उनकी आय को दुगना करने के लिए, ग्रामीण विकास के क्षेत्र के विकास करने के लिए, इरिगेशन सेवा के विकास करने के लिए, और पूरी एक रोड मैप इस बजट में है कि हम किसानी को कैसे मदद करेंगे। जो न्यू इकोनॉमी की चिंता की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैं देश के आईटी मंत्री के रूप में बहुत ही प्रसन्न हूं कि इस पर बहुत जोर दिया है कि इस तरह गाँव को और ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाए जो बचे हुए गाँव हैं। Personal income tax relief is concerned, of course, we would welcome any relief given to the income tax payers in the lower brackets. But whether it is 40,000 crore is a big question mark, because it is subject to the condition that you can't avail of exemptions. It's only when you trade off the exemption and the relief, you can really arrive at the relief. If they've finally thrown some crumbs at the lower tax bracket, I mean, it's not a matter to be welcomed or congratulated about, but any relief to the lower income tax bracket, we welcome it. तो सबकी राय सामने आ रही है फ्रैंक, और अब जान लेते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर। पोखरियाल जी, सर किस तरह का बजट देखते हैं आप शिक्षा के? ऐतिहासिक सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का और विविध आयामों से भरा ये ऐतिहासिक बजट है। और विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली और उच्च शिक्षा में जिस तरीके से 1 लाख करोड़ से भी अधिक का प्रावधान किया और हिपा अतिरिक्त है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ। और नई शिक्षा नीति की भी उन्होंने घोषणा की है। ये नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में आधारशिला बनेगी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को कैसा लगा बजट, वो भी जानते हैं। Joining us is Minority Affairs Minister Mr. Mukhtar Abbas Naqvi, sir. What was the most crucial highlight for you in this budget? ये बजट परफेक्ट बजट है। ये बजट जो है वो प्रैक्टिकल बजट है। एक परफॉर्मिंग सरकार का रिफॉर्मिस्ट बजट है। सबका साथ सबका विकास इंश्योर कर रहा है ये बजट? सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास से भरपूर बजट है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी क्या कह रहे हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री सारंगी जी। सारंगी जी, किस तरह का बजट देखते हैं? ये बजट बहुत लोगों कल्याणकारी है, एक कम्प्रिहेंसिव बजट है, गरीबों के लिए समर्पित है और रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है। MSME पर खास जोर दिया गया है। MSME में बहुत जोर दिया गया है। एक फंड की प्लेटफॉर्म भी है और बाकी सारा भिन्न भिन्न प्रकार का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। MSME के लिए बहुत उपयोगी बजट है, क्योंकि MSME में ही हमारा ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार आज है और इसलिए इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया है। वहीं सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की कितनी बातें मानी गई हैं, जानते हैं कि CEO अमिताभ कांत का क्या कहना है। पर ओवरऑल बजट में 2 खासियत है। एक तो ये बजट समझता है कि गवर्नमेंट अकेले देश को नहीं बदल सकता, प्राइवेट सेक्टर को आना ज़रूरी है, इसलिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बहुत थ्रस्ट दिया है। और रेलवेज़ में ही नहीं, कई क्षेत्रों में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बहुत थ्रस्ट दिया है। और दूसरी चीज़, नई टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, क्वांटम कंप्यूटिंग को और नए नए डेटा सेंटर्स बनाने की बात की है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और ये मेरे विचार से बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ है। और लगातार कहते रहे हैं नीतियों की डेटा इज अ न्यू ऑयल, और वो एक क्लीशे भी उन्होंने आज बताया। Absolutely, we saw that happening as well. जी, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रीति सूदन का क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। आज बजट पेश किया गया जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 69,000 करोड़ रुपए की देने की बात की गई, जिसमें टीबी हारेगा देश जीतेगा भी बात की गई। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सचिव प्रीति सूदन। मैम, ये बताइए कि इस पर किस तरह से काम किया जाएगा और किस तरह से टीबी को हराया जाएगा बेसिकली। तो अभी आपने देखा कि इस बार बजट में हमारी माननीय फाइनेंस मंत्री ने बहुत एम्फेसिस दिया है हेल्थ पे। हम न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे हैं, डीबीटी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेशेंट्स को जो टीबी के इलाज पर हैं। उसके बाद फिर ये नहीं पता चलता था कि जब हम मेडिसिन शुरू कर रहे हैं टीबी पेशेंट की, स्पेसिफिकली उसकी जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो किसकी है। तो अब हमारे पास मॉलिकुलर टेस्टिंग मशीन्स हैं, CBNet मशीन्स हैं, हमारे पास TrueNet मशीन है। स्वास्थ्य क्षेत्र को और किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा इसमें?
तो आपने आज बजट स्पीच पढ़ी होगी, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो ये था कि एक तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस था, दूसरा मेडिकल एजुकेशन पे एम्फेसिस था, और डीएनबी और एफएनबी जो हमारे स्कीम्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इनकरेज किया जाएगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को ट्रेन करो ताकि हमारे जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो सके। पीपीपी मॉडल के तहत अस्पताल नए खोले जाएंगे, तो कहाँ कहाँ ये अस्पताल खोले जाएंगे और किस में स्पेशलिटी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जैसे कि बजट स्पीच में भी कहा गया कि प्रायोरिटी होगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स लैंड देंगी उनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी प्रोविजनिंग होगी। और बात करें अगर मिशन इंद्रधनुष की, तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त जोड़ी गई? तो मिशन इंद्रधनुष में 12, जैसे कि अगेन माननीय एफएम ने बोला कि डीपीटी, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी, हिब बी जिसे हम कहते हैं, और फिर न्यूमोकॉकल और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी, और साथ ही इकोनॉमी की हेल्थ भी सुधारने की लगातार कोशिश कर रही हैं वित्त मंत्री। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या कह रहे हैं बजट को लेकर। बजट के बारे में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐतिहासिक बजट है। गांव, गरीब, किसान का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। व्यक्तिगत आयकर में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। मतलब देश हित में और लोक हित में बजट है। किसानों के लिहाज से कैसा बजट? देख, किसानों के लिए इतना अच्छा बजट है कि 20 करोड़ किसानों को सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे, उनकी बंजर भूमि में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाकर उनकी बिजली ग्रिड में दी जाएगी। ऐसे किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, उसके लिए इस बजट में प्रावधान किए। तो आपके लिहाज से सर्वस्पर्शी बजट? सर्वस्पर्शी बजट है, देश हित में है, लोक हित में है, और इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। और आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा की क्या है प्रतिक्रिया। बजट के बारे में आपकी? Sir, very progressive budget that has been given by Nirmala Sitharaman. Really, it is a wonderful budget wherein the total image of the country should go. Farmers, women, even elderly people, even cut off several taxes to personal individuals. Everything has been covered. Especially for Karnataka, you can see we have got about 80,000 crore that suburban railway that has been approved. It's a really the people of Karnataka are very thankful to the Honorable Prime Minister and the Finance Minister. Even an express corridor from Chennai to Bangalore, that is also, these are the areas of concern. Agricultural has given more than 3 lakh crores. It is a very great infrastructure, more than 1.2 lakh crores for infrastructure in the coming 5 years. So totally it is very progressive, and certainly it will be give a big boost. I think that the growth, GDP growth will go high because of the various initiations taken by the Prime Minister and Finance Minister in the budget. Income tax slabs में भी कुछ? Yeah, it is certainly. See, people, they feel that yes, because of this small inflation and all that need to be taken care of. That has been taken care of. Even every individual who is paying income tax earlier, he has been relaxation. These are good budget. It is an extremely good budget. There you have it, Sonia. We heard what all the union ministers, in fact, had to say as far as the budget is concerned. Everyone giving it a thumbs up and saying that it's a historic budget. Is what सोने पे सुहागा भी exactly. All right, let's take the discussion forward now and speak to our panelists here in our studio and talk about what the political message really is from this particular budget. Let's not forget, the budget document at the end of the day carries a strong political message as well. In the past, we have seen that, and today too,
there were a few political messages that were carried out in this budget document as well. We'll talk about that with our panelists here. Shivaji Sarkar, senior journalist, joins us on the program today. Also with us, Bhanuchandar Nagarajan, former consultant at the World Bank, and Jatin Gandhi, senior journalist as well. Thank you, gentlemen, for joining us this evening to talk about this particular subject. Shivaji Sarkar, I'd like to begin the program or this part of the discussion with you, of course. Let's talk about the political message really and what stood out for you from a political point of view in today's budget. Now, you see, politically, if you ask me, now this government's main voter plank is the rural area, the farmers and the other rural community. So they have perhaps rightly focused on that, giving lots of sops to the farmers, the rural community, solar energy and all those kinds of things, whatever it is, they have given to them. Second plank is, of course, the corporate. Again, the corporate have been given lots of tax sops. Tax rates itself has been brought down, and in the PPP model they have been given lots of incentives so that they come and work with the government or can benefit from that, whether it is in the digital platforms. So that even if you say the railway Wi-Fi, naturally it can't be done all by the railways. So, or any other kind of digital platforms that they are talking about. So naturally the private sector is going to enormously benefit out of that. And then if you talk of, when you are talking of farmers, it is just not the tillers, even the fishermen, they have been given lots of sops. And what they have been given is a 200 lakh crore for the fishing community. I think that's a big area, and because that is one area in the coastal area, we see that the politically, those linked to the government, they are gaining in that. And apart from that, some of the elections that are going to take place in the south, possibly it is also targeted at that. So if you see from all those angles, I think the way it has been done is to cater to the maximum number of people so that they come and help not only in the process of development, but also in the process of continuity of the political process. So these are some of the things that we are seeing that is happening, and especially if you see what the Kisan, there are many things have been talked about, but when there is a Kisan Rail and Kisan Udan, how it is going to benefit them is a different issue, and how it is going to be done, because those roadmaps are yet to be opened up. But the target is that if Kisan is producing, he can have the benefit of a special train which can take their produce to the targeted market even if a faraway place. And the Kisan Udan, even there, the Kisan is being given a virtually, I don't know exactly whether it is going to benefit their products or not, but the Kisan himself, that now they can fly to the destinations where they want. So it is basically the aspirational aspect that is being talked about, that one district, one product. So if you take all these aspects, I think the budget is very focused on those areas. That benefit has to go to the people who can really contribute to the political process. And those who are in the margins, basically the salaried class, they have given a cafeteria approach. You take, if you want to have the incentives, take the old rates. If you don't want to have the incentive, take the new rates. So it is a cafeteria approach that has been offered to them. Right. So again, there is a political process, you see. Cafeteria approach, thalinomics. Thalinomics, yes, thalinomics is also there. Yeah. Absolutely. I think the basic concern of the economic survey, of course, everything has not been addressed, but somewhere it is being targeted to that area. But still, especially in the way the government borrowings are there, and the economic survey talks also about how it is going to affect the private sector. Many of those things are tried to be bridged up in the various budgetary processes and the various programs. Okay, Banu, let me bring you into the picture now. You know, as far as this particular issue of agriculture is concerned, in the past we've seen the opposition and several political commentators, in fact, criticize the BJP for not doing enough, or criticize the government for not doing enough as far as the agri community or the farmer community is concerned. Is that issue being addressed, or has the government tried to address that issue specifically through this budget? Frank, to answer your question in particular, not only is the rural sector being addressed as a political constituency, but also it's pertinent, because one of the repeated commentaries that we have heard over the last few months was that the rural demand has fallen down. So it makes both political sense and economic sense to focus on agriculture, which the finance minister has done in great detail
with the 16-point program. Many of the components was eloquently described by my previous panelist. In a democratic system, the budget is just a financial strategy document, but the actual vision document is the manifestos of political parties that say we will do these things if we are elected to power. If you map the financial strategy document, which is the budget, to the manifesto, there are way too many points that are addressed. So, in fact, the agriculture bit was one of it. Like there was a talk on on doubling the farmers' income by 2022, on which these efforts have been taken. Just to get a segue away from the politics bit of it, one thing that has to be appreciated, irrespective of whichever political party is in power, is that the Indian economic system always takes advantage of slowdowns to push for reforms, which is actually borne out by this 2.1 lakh crore disinvestment target. One has to wonder if there was not a slowdown, whether this would have happened. But our Indian system always finds way of doing reforms when things are down. Number two is when during a slowdown, multiple things could have been done, which could have been detrimental to the stability of the system. So kudos to the finance minister that she kept everything under control. It is more art than science, as we have spoken before. Even the fiscal deficit slippage has been within the law. So these two systemic stability issues that have been cleverly addressed has to be appreciated. Coming back to the political point, we spoke about the rural bit in terms of agriculture, but not just agriculture. Even if you take infrastructure, there has been a heavy thrust on rural infrastructure. Even within infrastructure, there is a skill building aspect. If you come to health, there has been a focus on building hospitals in these aspirational districts, and also expansion of the health and wellness centers, which are going to give a fiscal push or thrust in rural areas. So we should actually compare this vis-a-vis the doles that are usually rolled out during the times of fiscal economic downturn, in terms of farm waivers or like general, printing and throwing of money from the helicopter, as economists call. So that has not been done. Some productive infrastructure building has been focused on rural areas. There are other constituencies that have been addressed as well. The middle class, as you know, from the tax rebates that have been given, the startup community through exemptions from the ESOP part of it, and also exemptions from taxes and everything. Even within this financial constraint, there has been a focus on genetic updation, quantum computing, and so on. So I think all the constituencies, the new and the old, have been addressed. We'll talk about other things further. Like I just want to stop my comment now. जी, और मैं जतिन आपसे सवाल पूछूंगी, थोड़ा सा हटके है ये जो अभी चर्चा चल रही है, म्यो वतन और कश्मीरी पोइट्री, तमिल का इस्तेमाल, फिर हिंदी का इस्तेमाल, तो ये इतनी सारी लैंग्वेजेस बीच में बोलना, फ्रेंच भी हालांकि उन्होंने बीच में बोली थी, तो और साथ में कश्मीरी से शुरू करना, तो ये किस तरह का पॉलिटिकल मैसेज आप देख रहे हैं, और खासकर उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरा वतन को दोबारा एम्फसाइज करना. Sorry to interrupt, but since you just said थोड़ा हटके है, तो I'll add something else to it as well. It reminds me of the 3-language formula as well. So if we could bring that into the mix too. So you see, Kashmir, nearly 31,000 crore has been set aside for, the Union Territory of J&K, about 6,000 crores for Ladakh. So clearly, after abrogation of 370, Article 370, obviously the government has been trying to send out a message that, it's not just Kashmir, the territory of Kashmir that is ours, it's also the people of Kashmir that is ours. And if you remember, about last month there was a plan to send out as many union ministers as possible to go and talk about the kind of plans that the government has for the Union Territory of Jammu and Kashmir. All said and done, but on a lighter note, I think it is all these things that that probably made this the longest budget speech ever. जी, और डल लेक में कमल खिलेगा वो हमें भूलना नहीं चाहिए. जी, आपके पास आऊंगी कि सोशल सेक्टर को किस तरह का पॉलिटिकल मैसेज जाएगा. नहीं, सोशल सेक्टर में देखिए, जिस तरह से अगर हम हेल्थ को ले लें, सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हेल्थ एजुकेशन को भी उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर हॉस्पिटल्स हैं उसको भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे.
मेडिकल कॉलेजेस जो है उसका प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा, जो प्रेसिडेंट के एड्रेस में भी है कि द सीट्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो हेल्थ का जो एस्पेक्ट है उसको दूर दूर तक गांव तक ले जाना, जो आयुष्मान भारत के उसमें जो है उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की जो एक कोशिश की गई है, एक तो ये है। दूसरी चीज़ एजुकेशन की बात आप कर रहे थे। एजुकेशन में जिस तरह का इस बार एलोकेशन किया गया है वो एलोकेशन अगर रियलिटी में ट्रांसलेट होता है तो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें अच्छाई हो सकती है। तो वो जो अच्छा होगा, और उसमें भी खास करके देखा गया है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। उसमें मैंने पूरा देखा नहीं है, पर उसमें अगर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर भी अगर तवज्जो दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन जो है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ फंडिंग आ रही है आइदर फ्रॉम द कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट सेटअप इंस्टीट्यूट्स, और दूसरी ऐसी है जो कि किसी भी तरह से ट्यूशन फी लेके चला रहे हैं एंड दे आर गैस्पिंग। सो द क्वालिटी इज ऑल्सो गैस्पिंग देयर एंड द डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी हाई। तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो अगर पीपीपी मॉडल से होता है, जैसा कि सरकार ने अपने बजट की स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा है, तो वो एड्रेस होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उस पर सरकार को तवज्जो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन को जो है हम जस्ट ये नहीं कह सकते हमने इतना एलोकेट कर दिया और सारे सरकारी इंस्टीट्यूट्स को ही हम दे रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को ही दे रहे हैं। दे आर ऑलरेडी फ्लश विद फंड्स, दो दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम, दैट्स अ डिफरेंट इशू। दूसरी चीज़ जो है, अगर रेलवेज़ की हम बात करें, उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम रेलवेज़ को पीपीपी मॉडल से बढ़ाएंगे, ट्रेन्स पीपीपी मॉडल पे चलेंगे, वो एक अच्छी बात है। तो उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि पीपीपी मॉडल पे जब चलाते हैं तो ट्रेन्स की जो पैसेंजर फेयर है वो डायनामिक होता है और वो जो है आम गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो जाता है। तो मुझे लगता है सरकार को उसका भी ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी रेलवे स्टेशन पे कहीं भी चले जाएं तो आपके पास 2-4 आदमी ज़रूर आके पूछेंगे हमें कोई ऐसी ट्रेन बता दीजिए जिस पे हम चढ़ सकें। तो जहाँ तक सबका साथ सबका विकास का है, सरकार को उसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा। तीसरी चीज़ जो है, जो नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं उसमें जो है 20 स्टेट्स में जिस तरह से पॉवर्टी का बारे में उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसका रिफ्लेक्शन इसमें उतनी तरह से नहीं आ रहा है। तो उन चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह से डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स के तहत उसको एड्रेस ज़रूर किया गया। पर मुझे लगता है एक चीज़ जो है, जब मैसेजिंग करते हैं आप, तो मैसेजिंग में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। तो वो कंसोलिडेटिव मैसेज जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पिछले 5 सालों में 431 प्रोग्राम्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए। अभी इसके साथ इस बार जो है बहुत सारे और नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, पर जब इसको मैसेजिंग करने की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कुछ बंचिंग की ज़रूरत है। जैसे एग्रीकल्चर के का 16 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसी तरह से इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके कहीं बंचिंग करने की ज़रूरत है और बताना चाहिए कि हाँ मेरे पास 100 प्रोग्राम है पर खास 5 ग्रुप्स ये हैं। तो उससे लोगों के जो मैसेजिंग के जो है, देखिए सरकार में जब होते हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस में होते हैं तो संवाद बहुत ज़रूरी होता है। तो संवाद को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ग्रुपिंग कर दें, छोटे उसमें बताएं और लोगों का आसानी से समझ में आ जाए। फैलाव जो है व्याप बहुत बड़ा है, पर फैलाव को समेटने की भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है। Right, absolutely. You know, talking about the programs, talking about the Aam Aadmi and talking about, giving it to the Aam Aadmi, let's take a look at who's got what now. Tina Jha is standing by in our data center. Over to you, Tina. Thank you, Frank. So to give our viewers a clearer picture of who's got what, let's talk about the allocations, a very significant one made to different sectors in Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget today. Beginning first with the education sector, which has been allocated 99,300 crore rupees with an additional 3,000 crore rupees for skill development. Now, this has been one thrust area of this government, in particular that of Prime Minister Narendra Modi. Remember, since 2014, when he came to power for the first time, skill development has been on one of his focused lists. And then 69,000 crore rupees have been allocated for overall healthcare sector, under which 6,400 crore rupees have been given to Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, another flagship scheme of this government.
3.6 lakh crore rupees have been approved for Jal Jeevan Mission, 11,500 crore rupees only for this year, 2020-21. 12,300 crore rupees have been allocated for the Swachh Bharat mission for this year. And in the industry, commerce and investment sector, 27,300 crore rupees have been allocated for development and also the promotion of industry and commerce in this financial year. 100 lakh crore rupees will be invested on infrastructure over the next 5 years, of which 1.7 lakh crore rupees has been proposed for transport infrastructure in the country. 22,000 crore rupees proposed for power and renewable energy sector. And further, an allocation of 35,600 crore rupees has been made for nutrition-related programs proposed for the financial year 2020-21. 28,600 crore rupees proposed for women-specific programs and 85,000 crore rupees for the welfare of scheduled castes and other backward classes. 53,700 crore rupees will be provided for further development and welfare for the scheduled tribes and an enhanced allocation of 9,500 crore rupees provided for senior citizens and Divyang. So all of this falls under the caring citizens category. In fact, the theme highlighted by the finance minister. Coming to the culture and tourism sector, an allocation of 2,500 crore rupees has been made for tourism promotion in the country and 3,150 crore rupees proposed to the Ministry of Culture. Also, for the cause of environment and climate change, for which India has been doing a lot in recent years, an allocation of 4,400 crore rupees for 2020-21 has been announced, and also for the development of union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, an amount of 30,757 crore rupees will be provided in the financial year 2020-21. 3,049 crore rupees have been allocated for the development of the Northeast region, another focus area for this government. Also, in her budget speech, the finance minister noted that quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cyber security with widespread applications, and a number of commercial applications are expected to emerge from theoretical constructs developing in this particular area. And therefore, she has proposed to provide an outlay of 8,000 crore rupees over a period of 5 years for the National Mission on Quantum Technologies and Applications. Now, if we look at the sector-wise allocation, 5,040 crore rupees have been allocated for urban development, 67,484 crore rupees earmarked for the health sector, 91,823 crore rupees for the transport sector, as we told you, another thrust area of this government. So the health sector, if we talk about, the Prime Minister Jan Arogya Yojana has been one of the focus areas of this government. Although several states have not implemented it, the earmarked amount is quite significant. 99,312 crore rupees have been allocated for the education sector, as we told you, 3,000 crore rupees only for skill development. 1,44,817 crores have been given to the Ministry of Rural Development for the financial year 2020-21. 1,54,775 crore rupees for agriculture and allied activities. So agriculture is one of the top focus areas for this government. A number of schemes have been announced, in particular Kisan Rail and Kisan Udan scheme have been given, and for which 1,54,775 crore rupees have been allocated to the agriculture and allied activities sector. 1,14,387 crore rupees have been given to the Ministry of Home Affairs, and an allocation of 3,23,053 crore rupees have been given to the defense sector. Besides, a sum of 100 crore rupees has been kept aside for preparations for the G20 presidency that India will be hosting in the year 2022. That's it from me, Frank here. Over to you. बहुत बहुत शुक्रिया टीना, आपने बताया कि किस परियोजना और किस तरह की जो आवंटन किए गए हैं उस सब के बारे में आपने बताया। लेकिन यहाँ पर हम और आगे बढ़कर ये देख रहे हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल मैसेज या बाकी मैसेजेस दिए गए हैं और इंडिया इंक को क्या मैसेज दिए गए हैं। भानु, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से
टैक्स टेररिज्म की बात कही, टैक्स चार्टर की बात कही, कंप्लायंसेस कम करने की बात कही, जो ट्रस्ट डेफिसिट एक आ रहा था, क्या वो कम होगा? Yes. So one of the complaints that has been laid by the corporate to the governments over the years, like in fact over decades, has been that the government has a overweening controlling presence over the private sector. And over the past 5 years, which has been magnified, the message has been magnified in this budget, is that the private sector has to partner with the government in the progress of the country. Mr. Amitabh Kant also recently, like you had played a clip a few minutes ago, he was stressing on that as well. In this regard, one of the biggest complaints that the private sector had against the government were pending regulations, pending cases, and things like that. So there has been an effort to actually attend to both of them. The ease of doing business, which has been a focus of this government over the last few years, has made tremendous progress. And in this case, there's an amnesty scheme, sort of a partial amnesty scheme on tax disputes. So these two things. But other than that, even for growth and development initiatives, the finance minister has said that has announced many PPP schemes, saying that the private sector has to participate in building of these infrastructure, and she has in fact announced viability gap funding for a couple of them as well. And the 103 lakh crore infrastructure plan will be impossible without the private sector. So I think the private sector is seen as a active participant. If you look at the corporate financial side of it, there has been the corporate tax cut which happened a few months ago. Adding to that, now there is a reform in the DDT, dividend distribution tax, and so on. So I think the corporate sector will be quite happy, I guess, with what is there. And as I mentioned before, there was an opportunity to do so many things because we are in the midst of a downturn, but there has been a lot of sanity that has gone into keeping the fiscal deficit numbers within the bound that is legally allowed. So I think like the platform for growth or stable, solid growth has been laid. So let's see how the private sector responds. जी, और इसके साथ ही जो मिडिल क्लास है वो कह रही थी कि कुछ करो ना, तो कुछ किया तो है। जतिन, ये बताएं कि ये चीज़ क्लियर अभी नहीं समझ में आ रही है कि जो नए टैक्सेस का उन्होंने रेट बताए हैं और कहा है कि जितनी भी एग्जेम्पशंस थी वो सब आप हटा दीजिए, तो क्या चक्कर है कि क्या आप सेविंग्स कल्चर ख़त्म कर रहे हैं? क्या आप उसको डिस्करेज करना चाहते हैं सेविंग्स को? उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, एक इस बजट से उम्मीद की जा रही थी कि कुछ फाइनेंशियल स्टिमुलस आएगा, पर उसका जो जिम्मेवारी है वो डाल दी गई है एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे, जैसे भानु कह रहे थे कि उनको एक्टिव पार्टनर बनाया गया है, और दूसरा अभी जो टैक्स पेइंग क्लासेस हैं फ्रैंकली उनके लिए कोई इतना ज़्यादा रिलीफ इसमें है नहीं। सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर आप सेव ना करके, एग्जाम्पशंस ना क्लेम करके अगर आप खर्च करते हैं तो वो पैसा इकोनॉमी में आएगा। और दूसरा, जहाँ तक पॉलिटिकल मैसेजेस की बात है, क्योंकि बीजेपी के बारे में आज से 7-8 साल पहले माना जाता था कि ये अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी है और जो छोटे दुकानदार हैं ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, लेकिन बीजेपी अब अम्ब्रेला पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी देश की बन गई है, कांग्रेस को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो जो नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स बीजेपी की इलेक्टोरेट में जुड़े हैं उन सबको के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। आप देखिए, जैसे 1.4 लाख करोड़ जो है SCs, STs, OBCs इनके जो प्रोग्राम हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रावधान किया गया है, JNK लद्दाख के लिए मैंने आपको बताया अलग से जैसे किया गया है। तो अभी जो मिडिल क्लास है उनके लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है। उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आपकी आय एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों को अभी हम उन पे ध्यान दे रहे हैं जी। एंड another thing was that the traders have been pretty upset about the e-commerce companies and they've been pretty vocal about it. Any message given to them? Well, small traders and small shopkeepers have been given some sops, of course. And some one shop is, of course, that up to 5 lakh crore of their 5 crore of their turnover, they won't have to do even auditing. Yeah. So these small things have been done for them. But overall, if you see what the NIP was declared, that was in December. As per that NIP, most of the roadmap has been set, and which finance minister also announced in this speech quite a few number of times,
that through those NIP, most of the things that Bhanu was saying is going to be achieved. Now the issue is, there is one aspect I think government needs to, and finance minister also needs to take care of. That is, there has been from almost all the sectors, especially the truck operators, they have been often complaining, and that complaint has not stopped yet despite various steps that have been taken in the road sector. And they say that this toll gates must be removed. So government need to take a look at that. If it removes, actually doesn't government loses nothing, because through various other cess and other kind of things, government is having more than 1 lakh crore rupees of money for that purpose. And if you look at the entire road sector project, it doesn't go, if you take Gram Sadak Yojana or the NHIA or others, it doesn't go beyond 1 lakh crore rupees. So why you are retaxing all those people who are using the highways and expressways? If you smoothen it out, as they have been demanding, that would give a better political messaging that the roads movement is free for everybody, and that will give a turnover to the entire economy. I think government needs to look at that. There has been 2 years back also, in one company, there was 91,000 crore, virtually they lost it and the company collapsed. So these are some of the issues they need to look at and give a better messaging. They have done a very good messaging in many ways. So this one messaging is possibly killing many of the gains that they are having. So if they smoothen it out, the roads are smoothened out, because you are already having from cesses and other, the entire money that is coming out. So it should not be made an issue of realizing revenue. Revenue realization should be different, and giving basic speed to the economy should be different. So that one aspect they have to look at. Not only that, there are many other aspects you see. The corporates, some of the things they have got, but not everything they have got. Now it is very necessary, you see, many people will crib that they have been given a 22% tax slab and 14% for the new operators, and crib it, but they should not. You see, the corporates are equally in problems, and if we give these kind of benefits to them, it is definitely going to find its place in the overall economic growth. That kind of thing must be looked at and done. So corporates, that taxpayer that you were talking about, I think it is a very good messaging to the entire, that you see the government cares for them. But the government has to extend that to even individual taxpayers. And it has to see this cafeteria approach, I think, is going to create a kind of a confusion. So good messaging by one small thing can lead to something else. So that shouldn't happen. Now, of course, the time is there. Once the budget is placed, there is discussion and there are chances for amending it. So government should look at that, it should amend it. And what he was talking just now about incentivizing savings. You see, Indian economy for the last 50 years have been growing on individual savings. For the last few years, it has come down by almost 5 to 6%. So it is not desirable, because Indians' savings, that is the biggest asset we have seen through some of the crisis periods. When the world economy collapsed, say in 91 when the Soviet Union collapsed, 97 when the Southeast Asia collapsed, or even 2007 when there was a subprime crashing across the Western world, Indian economy thrived because of these reasons. So these are the basic core strength of Indian culture that must be reinforced, so that the government, this government, when it talks of Indus Valley civilization, that cultural pattern should continue, and the growth that we are seeing and we want, that can be really multiplied, because once your aim is Antyodaya, the last man, for the last man, we have to be slightly more considerate. Okay. And Bhanu, I'm going to come to you now. We've talked about corporates, we've talked about disposable income when it comes to household. Another thing, cleaning the system, and cleaning the air. We've been seeing ailments, respiratory ones, and till now it was only till North India that the pollution was increasing, but now it has gone even to the central part of India. इस बजट में environment को लेकर आपको क्या लगा? In fact, one of the biggest thrusts of this budget when it comes to infrastructure is in solar power. This is probably found inspiration from what Prime Minister Modi did when he was Chief Minister of Gujarat, when
along the rivers and canals, solar cells were installed so that the evaporation could stop as well. So there is under the PM Kusum Yojana, there has been quite a bit of thrust on solar power. Fallow lands are going to be used in solar power, and there are going to be incentives to farmers to use solar power for motors and power generators. So that is the biggest thrust in terms of environment is concerned, and also like we spoke about the Paris Agreement and how we have been we are being a leader at the global stage as far as environment and climate change is concerned. So quite a bit of that has been touched as well. When it comes to health, like the Secretary Ms. Sudan was mentioning, there's a renewed focus on tuberculosis eradication, and hopefully, like we get done with that scourge in another 3-4 years. So in terms of human capital development, not only in education, not only in health, but also in education, there has been quite a bit of thrust. Last time, the budget for education was around 93,000 crores. Now it is almost 1 lakh crore. So that is a substantial increase in outlay. But the interesting bit would be to see how much of the new education policy recommendations are going to be implemented with the extra 7,000 crores that the government has allocated. So that will be the interesting thing to watch. There has been focus on online education and online degrees, which is very impressive, because we want to increase our gross enrollment ratio from 25 to 33 over the period of next few years. This online programs and certification will be a very useful tool. This will make not only courses easy to access for students that are already there, but even for people who are out of school, they can participate in this and become very productive. So the thing is, all of this is going to improve the human capital of India. Once our human capital is set, they'll be more productive members of the society. The productivity of the economy will improve. And given the technology platforms that we have, people from remotest parts of India can connect to the global market through technology. So given this, and also very importantly, the thrust on Beti Bachao, Beti Padhao, like our women, our girl children have been now, like, they are surpassing men, which is probably the best news that would make any Indian happy, that came out of the budget today. So that is also like one of the indicators that is holding back India's growth is what is called the female labor force participation, which is actually quite abysmal. It is around 20 or something in India, while in China it is 63. So all of this productivity improvements, human capital investments are going to help us in the long run in terms of economic growth. जी, और साथ ही जतिन, आप ये बताएं कि जिस तरह से बानू भी बोल रहे थे कि ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि एक नई चीज़, अभी तक डेटा काफ़ी सस्ता मिल रहा है, उसको एक अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और डिग्री लीजिए। कई लोग एजुकेशन के कॉस्ट नहीं पे कर पाते हैं। तो ये एक लाइन जो एफएम ने आज बोली कि न्यू इकोनॉमी डिस्टर्ब्स ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, तो ये किस नई इकोनॉमी की तरफ की बात कर रहे हैं? और जिस तरह से हमने देखा है कुछ सेक्टर्स में काफ़ी कम ग्रोथ रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है, जो नई इकोनॉमी वाले सेक्टर्स हैं। तो क्या ये एक मैसेज है कि अब नया इकोनॉमी जो है उस पर ध्यान दीजिए, स्टार्टअप्स और शुरू कीजिए और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए? देखिए, जो सिलिकॉन वैली वो इंडियंस वहाँ बैठ के हमारे चलाते हैं, और ये एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पर नीति आयोग भी काम कर रहा है। तो इसको अगर हम अभी से ग्रास्प कर लेंगे, जैसे पीएम ने बोला कि ये इस डेकेड का पहला बजट है, इस दशक का पहला बजट है, तो इस दशक की तैयारी इस बजट में नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसी वजह से जैसे अब उन्होंने एक एजुकेशन की आपने बात की, तो अब अफ्रीका और एशियन कंट्रीज से जो लोग यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करने का, तो जिस प्रकार से यूरोप, यूके, यूएस जो हैं एक एजुकेशन डेस्टिनेशन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बन गया, सिंगापुर है, हांगकांग है, स्टडी इन इंडिया। तो ये सब जो है जहाँ जब पुराने बिजनेस मॉडल्स कोलैप्स करेंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो नई चीज़ें चाहिए उस पर काम किया जा रहा है। ज़रूर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर तवज्जो दी गई है। तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि देखिए, जो तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारी,
वो तकरीबन 16-17%, 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। तो उनको उस गुर्बत से, उस गरीबी से निकालना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारा दूसरा एरियाज़ हैं उनको भी भूल जाना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो मशीन लर्निंग और एआई पे फोकस की बात की है, ये एक लॉन्ग टर्म इसको फॉलो अप करना पड़ेगा और ये अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से। जी, और इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरह से बताया गया था कि अगर भारत से अमेरिका सामान भेजना हो तो 41 डेज लगते हैं, जिसमें से 19 दिन तो भारत के पोर्ट पे ही लग जाते हैं। इस तरह के जो रेड टेपिज्म है उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था। एक और चीज़ जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना भारत में आसान इतना नहीं है, बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है। आज बजट में कहा गया इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के बारे में, तो ये भी एक संदेश देने की बात की गई है। बिल्कुल, ये संदेश देने की बात की गई और आज पहली बार नहीं की जा रही। मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों में कई बार किया गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आती है, वो ठीक से जिस तरह से सरकार चाहती है उस तरह से नहीं हो पाती है। आज उसको रीइटरेट किया गया है कि एक न्यू इन्वेस्टमेंट सेल बनाया जाए जिसके ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है आसान हो जाए। पर अगर इकोनॉमिक सर्वे की आप बात करें तो चीफ इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि हमारे देश में अगर कोई आप उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो 18 दिन लगते हैं। 18 दिन का मतलब नहीं है एक महीने में 18 दिन, 18 वर्किंग डेज स्प्रेड ओवर मेनी मंथ्स परहैप्स। तो ये जो चीज़ है इसको आसान करना जो है बहुत आसान वर्तमान जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी खाई जो है हमें देखने को मिलता है अभी भी, पॉलिटिकल सोच जो है वो काफ़ी आगे चलती है और जो ऑफिशियल्स की सोच है वो उनके सिंक तो होती है, पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और इस देश में अगर आप देखें जो बहुत से जो डिस्कॉन्टेंट होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि दोनों में सिंक नहीं है। अब दूसरी आप चीज़ ले लीजिए इसी के साथ, अब क्लीन एयर सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह क्लीन एयर मिले। उसके साथ साथ हम करें इको फ्रेंडली सिटीज़ भी बनाएंगे, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे सारी तरफ। और दूसरी तरफ जो हम क्या कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के आसपास हम एक नया एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं भूल जा रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्वीफर्स ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ के किसानों में डिस्कॉन्टेंट हो रहा है। हम उसको भी हमें सुनना और देखना चाहिए। मुंड्रा एयरपोर्ट पे वहाँ पे भी यही समस्याएं आ रही हैं, फार्मर्स और वहाँ के लोगों में डिस्कॉन्टेंट हो रही है। तो इन डिस्कॉन्टेंट को भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ें छोटी होती है, बड़ी दूर दूर होती हैं, पर वो जब एक साथ कई बार हो जाती हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। तो वो अगेन जो मैसेजिंग की जो बात है, वो मैसेजिंग में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दिल्ली में इतने सारे एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है? कहाँ ईंधन भी आपने शुरू कर दिया और इस तरह की बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं खास करके जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स है उसका मेरे ख्याल में लगता है कि वाइडर डायलॉग के ज़रिए हमें देखने की ज़रूरत है और सरकार को उस वाइडर डायलॉग को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। देखिए, गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए बजट और लाइक दैट। गवर्नमेंट का काम है जहाँ जहाँ लैकुना हो रहा है उस लैकुने को प्रोसेस करना, जो इस बजट में बहुत सारी चीज़ों में किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में हैं, जिसको एक चीज़ जो है इस बजट को देख के एक चीज़ से लगता है कि बजट से पहले का जो डायलॉग प्रोसेस है वो काफ़ी वाइड रहा है जी। और इसी के वजह से जो है मेरे ख्याल में वित्त मंत्री का जो भाषण है वो भी काफ़ी लंबा हो गया है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मैसेजिंग की प्रक्रिया है कि हर एक को हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, पर वो सोच को धरातल पर लाने की ज़रूरत है। और उस धरातल पर लाने के लिए सरकार को शायद, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से सोच रहे हैं और बजट के बाद भी उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं जी, वो बहुत पॉजिटिव है जी। तो ये सारी कुछ चीज़ें और सरकार कर लेगी। तो ये जो मैसेजिंग की जो पार्ट हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग, जो इस पूरे बजट के प्रकार पन्नों में दिखता है जी, तो वो मैसेजिंग और स्ट्रांग हो जाएगी और उसके जरिए जो है हम जो चीज़ चाहते हैं, हम चाहते क्या है कि हम एक 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए या उससे बड़ी हो जाए। तो यानी कि जो लगातार वार्तालाप करने की ज़रूरत है, अपने कान खुले रखने की ज़रूरत है और लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है, और कॉरपोरेट्स जो कह रहे हैं उनकी भी जो कंसर्न्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आपने चर्चा की और हमें मैसेज, जो पॉलिटिकल मैसेज और साथ ही सब सेक्टर्स को मैसेज है वो हमें दिया। राज्यसभा टीवी पर हम लगातार आपको बजट की स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।